इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस about business and environment separately. What is the meaning of business and what is the meaning of environment? Let's discuss. So the word business environment जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, बिजनेस एंड एनवायरनमेंट. टू हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस environment is necessary to understand meaning of these separately. What is business and what is environment? So business include all the activities connected with production, trade, banking, insurance, finance, numerous other related activities. What are the other numerous activities? Like as continuous activity होनी चाहिए यहाँ पर, and सेलिंग एंड परचेजिंग होनी चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज की, एंड प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, तभी वो बिजनेस कहलाएगा. सो ये तो हो गया बिजनेस. नाउ इफ वी explain the environment, then environment refers to all those external forces, all those external activities which have bearing on the functioning of business. According to, अगर हम यहाँ पर एम रिचमैन एंड मालैन कॉपर जो डेफिनेशन इन्होंने बताई है, उनके अकॉर्डिंग जो बिजनेस जो एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट ऐसे फैक्टर्स हैं जो largely if not totally external and beyond the control of individual industrial enterprises and their management, and essentially are given within which firm and their management operate in a specific country, and they vary often greatly from country to country. कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं, जो भी फैक्टर्स होते हैं वैसे ही वो इफ़ेक्ट करते हैं बिजनेस के लिए. सो बेसिकली एनवायरनमेंट जो है वो ऐसा एनवायरनमेंट में ऐसे फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल थिंग्स है बिजनेस एनवायरनमेंट में जो कंसिस्ट करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस पर अफेक्ट करता है. हमारा बिजनेस पे ये सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, वो सब अफेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस के लिए. इन सिंपल वर्ड ये है बिजनेस, ये है एनवायरनमेंट का मतलब. द एनवायरनमेंट बेसिकली एनवायरनमेंट मीन्स all the activities, all the external things to which it is exposed and by which it may be influenced directly और इनडायरेक्टली. कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनका इन्फ्लुएंस रहता है बिजनेस पर. इसलिए हम एनवायरनमेंट पढ़ते हैं जिससे कि हम रिड्यूस कर सकें थ्रेट के लिए एंड अपॉर्चुनिटीज़ को जान सकें. सो बेसिकली बात करें अगर बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिकली एक ऐसा क्लाइमेट ऑफ कंडीशन होती है जहाँ पर इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल जो भी कंडीशंस होती हैं इनकी, वो सब हम यहाँ पर पढ़ते हैं. इन विच बिजनेस ऑपरेशंस आर कंडक्टेड, यहाँ पर बिजनेस ऑपरेशन कंडक्ट होते हैं. नेक्स्ट वन इज, अगर हम बात करें ओवरऑल क्या निकल के आता है रिजल्ट, तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो सारी कंडीशंस पढ़ता है, ऑल कंडीशंस, सर्कमस्टेंसेस पढ़ता है. इसके माध्यम से हम बिजनेस में क्या चल रहा है वो सब जान पाते हैं, एंड क्या अफेक्ट, किस चीज़ की वजह से अफेक्ट हो रहा है बिजनेस पर, कौन कौन सी चीज़ हावी हो रही हैं, वो सब चीज़ें हम जब बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ते हैं तो उसके माध्यम से पता लगा पाते हैं. दीज इन्फ्लुएंसेस कैन बी बोथ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल.
to a business unit. Number of changes have been taking place in these factors affecting the functioning and proper performance of industrial unit. So नंबर ऑफ़ चेंजेस हमारे लिए करने पड़ते हैं और नंबर ऑफ़ चेंजेस जगह लेते हैं बिजनेस में। जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट रीड करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हमें चेंजेस करने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमें रिक्वायरमेंट होती है कि क्या हमें चेंजेस करने हैं, क्या नहीं करने हैं, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं बिजनेस के लिए, तो उसके माध्यम से हम चेंजेस करते हैं बिजनेस में। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटेड विद इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जैसा कि हम लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से ही रिलेट करता है कहीं ना कहीं। बिजनेस तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है किसी भी पर्सन के लिए और किसी फर्म के लिए और किसी कंपनी के लिए। ये इट इंक्लूड all activities between his income and expenditure. Thus, it include all economic activity like agriculture है, industry है, business है, commerce है, transport है, and communication है, insurance है, banking है, government है, income है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती हैं। So, हमें ये पता होना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला और मेन पॉइंट हम रखेंगे रिलेटेड विद इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकंड थिंग इज़ अफेक्टेड बाय नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है बिजनेस। लाइक इफ़ आई डिफाइन नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, हाउ अफेक्ट नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, देन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय जियोग्राफिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। कहीं ना कहीं जियोग्राफिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के द्वारा भी इन्फ्लुएंस होता है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। इट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय नेशनल एंड इंटरनेशनल कंडीशंस। जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड लाइक नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट, वेदर, क्लाइमेट कंडीशन, टोपोग्राफिकल फैक्टर, लोकेशनल एस्पेक्ट एंड ग्लोबल कंटेस्ट। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं बिजनेस के लिए। एंड पोर्ट फैसिलिटीज़, जब हम इंटरनेशनली बिजनेस करते हैं। सो सोशल इंक्लूड सोशल कल्चर, एजुकेशनल, हेल्थ एक्सेट्रा। एंड द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इकोनॉमिक, policies. Politics also affect the business and other factors. So these all the factors affect the business. So basically, if I explain another point, which is guided and operated by government, means economic environment run under the control of government and guidance of government here. So in capitalist economy, government adopt the policy of minimum capital economy और मिनिमम इंटरफेरेंस। बट इन सोशलिस्ट इकोनॉमी अगर हम बात करें तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में ओवरऑल कंट्रोल जो रहता है वो गवर्नमेंट का रहता है, और गवर्नमेंट इटसेल्फ ऑपरेट ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज अफेक्टेड बाय गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज। इट्स इंस्पायरेशन, कंट्रोल, रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं बिजनेस के लिए। So next thing is infrastructure. Economic environment is influenced by the availability of infrastructure. फैसिलिटीज़ कौन कौन सी हैं जो अफेक्ट करती हैं बिजनेस के लिए, लाइक इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, पावर है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है एंड इंश्योरेंस है। ये सारी चीज़ें बिज़नेस के लिए इफ़ेक्ट करती हैं। तो हमारा जब बिज़नेस में ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में फैसिलिटी होंगी, हमारे लिए मिलेंगी, तब हमारा बिज़नेस अच्छा चलेगा। प्रेजेंस ऑफ दिस फैसिलिटी फेवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी ये फ़ायदेमंद रहती हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ पब्लिक अप्रोच। पब्लिक की अप्रोच क्या है? इफ़ द कंसेप्ट ऑफ जनरल पब्लिक इज़ ईटिंग, अगर ईटिंग है, ड्रिंकिंग है, एंजॉय है,
Then it developed to approach to earn more and more money. And in the prevailing economic environment, moral value are not meaningful in such society. So पब्लिक की अप्रोच भी हमें पता होना चाहिए, पब्लिक चाहती क्या है और किस तरह की अप्रोच रखती है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन सोसाइटी. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन सोसाइटी मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन लीड टू इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन. है अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी होगी और एक्सप्लॉयटेशन होगा कहीं ना कहीं, और जिसके माध्यम से इट एनकरेज फ्रस्ट्रेशन. जो फ्रस्ट्रेशन है इसकी वजह से एनकरेज जो निकल के आएगा एंड सोसाइटी में, एंड फाइनली टू ब्लैक मार्केटिंग, करप्शन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें होंगी. सो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वेल्थ इन सोसाइटी किस तरह से है ये हमें पता होना चाहिए. अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल सफिशिएंट होनी चाहिए. सफिशिएंट कैपिटल लीड टू कंप्लीट यूटिलाइजेशन एंड अवेलेबल ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज विच फाइनली हेल्प टू इंक्रीज इन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. नेक्स्ट थिंग इज इकोनॉमिक आइडियोलॉजी. हमें इकोनॉमिक आइडियोलॉजी पता होनी चाहिए. द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज अफेक्टेड बाय कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कम्युनिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी एंड अदर टाइप ऑफ इकोनॉमी. ड्यू टू कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी इन अमेरिका, आपको पता होगा कि इज लीडिंग ऑन प्राइवेट प्रॉफिट, property competition over production, self inspiration, new technique etc. This type of technique are used in America. So planned economy की बात करें तो planned economy क्या है. planned economy in planned economy the entire resources are under control of state and central प्लानिंग कमीशन प्लान अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी. जो प्रायोरिटी हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो हम पहले करते हैं, उस पर काम पहले करते हैं. सोशल वेलफेयर इज़ मोटो ऑफ एवरी प्लान एंड एवरी डिसीजन. सोशल मोटो पहले हम रखते हैं. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड व्हेन टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस. ये सब चीज़ें हमें पता होना चाहिए. कौन सा काम कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है और कितने टाइम में करना है, किसके लिए करना है, ये सब हमें पता होना चाहिए. एंड व्हाट विल बी द कॉस्ट, उसकी कॉस्ट क्या है, इज़ टेकन बाय प्लानिंग कमीशन. प्लानिंग कमीशन के द्वारा ये सारे डिसीजन लिए जाते हैं. सो इन आवर कंट्री बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर आर वर्किंग एज टुगेदर ड्यू टू द आइडियोलॉजी ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी. जैसा कि हमारे कंट्री में पता ही है आपको, मिक्स्ड इकोनॉमी यूज होती है, इसलिए गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं. मॉरल फैक्टर कौन कौन से हैं. मॉरल फैक्टर स्टेटस ऑफ पब्लिक इन्फ्लुएंस ऑल्सो अफेक्ट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड इट अफेक्ट अवर बिजनेस. सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक्सपेंड इन केस ऑफ पीपल हैज टेंडेंसी टू अर्न मोर एंड मोर मनी इन एनी वे. सो कहीं ना कहीं ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो हमने डिस्कस करे हुए. अब बात करें कंपोनेंट की. बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं. तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय नेशनल एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्टिविटीज़. कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं बिजनेस के लिए. एंड दस द होल wave of economy is interlinked and a change in one element necessarily affect the other. The main factor affecting business environment are कौन कौन से factors हैं main. Let's discuss. First one is human resources. Human resources. In human resources, what are the things in human resources? Demographic factor such as size of the population growth rate, age composition, life expectancy, family size, spatial dispersal, occupational status, एम्प्लॉयमेंट पैटर्न क्या है. ये सब चीज़ें हमें पता होना चाहिए, तब हमारा हम बिजनेस में अच्छे डिसीजन ले पाएंगे और अच्छे से प्रोडक्शन कर पाएंगे,
जिसके माध्यम से हम, जब हमें सब पता होगा तब हम अपना बिजनेस अच्छे से चला पाएंगे। अफेक्ट द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस, कहीं ना कहीं ये अफेक्ट करती हैं डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज की के लिए। एंड मार्केट एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड इनकम आर growth market, but the decline in the birth rate in countries has adversely influenced the demand, and rapidly increasing population indicate a growing demand for product. High production population growth rate also indicate an enormous increase in labor supply. जब ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो हमें लेबर ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी, जिससे कि माध्यम से उनको जॉब प्रोवाइड हो सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, और कहीं ना कहीं जब उनके पास पैसा जाएगा तभी वो उनकी डिमांड जनरेट होगी। तो कहने का मतलब ये है, ह्यूमन रिसोर्स कैसे हमें यूज़ करना है ये हमें बिजनेस एनवायरनमेंट में पता होना चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्री एज अ रिजल्ट एनकरेजेज लेबर इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन, गवर्नमेंट क्या करती है, इनकरेज करती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करने के लिए। द स्मूथ मोबिलिटी ऑफ लेबर between different occupation and region will increase labor supply and will affect the wage rate, कहीं ना कहीं वेज रेट पर भी इफेक्ट होता है। सेकंड थिंग इज़ नेचुरल रिसोर्सेज, हाउ टू मैनेज नेचुरल रिसोर्सेज, ये हमें पता होना चाहिए। अवेलेबल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री लाइक सोशल मिनरल रिसोर्सेज, वाटर लेवल, वेजिटेशन, टेपोग्राफी, रेनफॉल, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। अफेक्ट कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के लिए एंड फेवरेबिलिटी को अफेक्ट करती हैं। नेचुरल कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती हैं, एविडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये हमें पता होना चाहिए। एंड देयर कंप्लीट यूटिलाइजेशन कंसिस्ट इन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। सो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कहने का मतलब है ये है। सो लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लीड टू स्टारवेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड बैकवर्ड इन द सोसाइटी। बैकवर्ड, हमारे बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा जब हम ये स्टेप लेंगे, तो हमें ये नहीं करना है। सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट मीन्स सोशल कल्चर फैब्रिक इम्पोर्टेंट एनवायरनमेंट फैक्टर है सोशल कल्चर। इसलिए हमारा पहला काम ये है कि हम सोसाइटी के लिए काम करते हैं, तो सोसाइटी को ध्यान में रख के हम बिजनेस करें। हमें क्या करना है, पीपल की हैबिट जानना है, पीपल कंज्यूम क्या करना चाहता है, एंड लैंग्वेज क्या है, उनकी बिलीफ क्या है, एंड बिलीफ एंड वैल्यूज, कस्टम, ट्रेडिशन, टेस्ट क्या है, उनके प्रीफरेंस चाहते क्या है, एजुकेशन क्या है, उनके ऑल फैक्टर्स दैट अफेक्ट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फॉर अ बिजनेस टू बी सक्सेसफुल। इट्स strategy should be like it is appropriate in socialist cultural environment. And even when people of different countries use the basic product, the mode of consumption, conditions of use, purpose of use, or the perception of the product attribute may vary so much as a product attribute, मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन, कैसे हम प्रेजेंट करना है, पोजिशनिंग, मेथड ऑफ प्रमोटिंग, कैसे प्रमोट करना है हमें प्रोडक्ट के लिए, ये सारे कहीं ना कहीं फैक्टर अफेक्ट करते हैं बिजनेस के लिए। एंड सोशल कल्चर फैक्टर जो है वो डिटरमाइन करता है डोमिनेंट ऑफ फ्यू पीपल के लिए, कैसे हमें प्रोडक्ट को बेचना है, ये हमें डिटरमाइन कराता है। सो इन बिजनेस ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। सोसाइटी गिव्स बिजनेस अ कार्टर फॉर एग्जिस्टेंस। सो ये कहीं ना कहीं रीजंस होते हैं हमें बिजनेस में, जो हमें पता होना चाहिए कैसे हमें बिजनेस करना है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़,
Government policies such as इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, टैरिफ पॉलिसी, ये सारी पॉलिसी हमें पता होना चाहिए. में हैव प्रोफाउंड impact on business. Some policy development create opportunity and some as well as create threat. तो कहीं ना कहीं कुछ अपॉर्चुनिटीज़ की तरह काम करते हैं कुछ पॉलिसीज़, और कुछ थ्रेट की तरह काम करते हैं. हमें पता होना चाहिए पहले से ही, जिससे कि हम आगे में भविष्य में जो अनसर्टेनिटी होने की संभावना है, जो लॉस होने की संभावना है, वो कम हो सके. सो नेक्स्ट वन इज फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. Form of economic system means political system has close relationship with the economic system and economic policy. For example, the communist country had a centrally planned economic system. In most countries, apart from those laws that control investment and related matter, there are a number of laws that regulate the conduct of business. So कहीं ना कहीं ये लॉ बिजनेस को कंडक्ट कराते हैं. टेक्निकल डेवलपमेंट इज अंडरस्टूड एज द सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक और अदर ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज to practical tasks. If I do how we perform practical tasks, then we understand these things. It is through business that technology reaches people. Technology changes fast and to keep pace with it, and businessmen should be ever alert to adopt changes add technology to their business. And a firm which is unable to cope with the technical changes does not survive. If you not understood in business how the work in technology, then you should understand it. If you want to perform activities in business for long time, if you want to success in business, then you should adopt changes in technology development whenever requirement is there. You should definitely change. Next one is market condition. Market condition such as perfect competition, monopoly, imperfect competition, oligopoly also influence business environment. In the conditions of perfect competition, optimum utilization of resources is possible, and low production, high cost, high price, monopoly, profit prevail in the opportunity or in the monopoly market. सो रिजल्टिंग क्या होता है, एक्सप्लोटेशन कहीं ना कहीं होता है जब मोनोपोली चलती है किसी की, तो कंज्यूमर्स में. कट थ्रोट कंपटीशन प्रिवेल इन इम्परफेक्ट कंपटीशन, एंड दस मार्केट कंडीशन जो होती है उसका कहीं ना कहीं मेन रोल रहता है डिटरमाइन करने में बिजनेस एनवायरनमेंट को. सो नेक्स्ट थिंग इज कैपिटल एंड मनी मार्केट. कैपिटल एंड मनी मार्केट is also determined or determinant of business environment. Natural and human resources of the nation cannot utilized in lack of capital. Developed capital and money market provide कराते हैं डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंस एंड हेल्प करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड. कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं. हमारे पास जब कैपिटल एंड मनी होगी तभी हम अपना बिजनेस अच्छे से रन करा पाएंगे. नेक्स्ट थिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन. इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी. इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी itself cannot develop the economy. The entrepreneur, with the help of these resources, mobilize natural and human resources and further help in economic development. Thus, the entrepreneur utilize these resources and contribute in the economic development of the country. Next thing is economic laws. Economic and law
labor labor law also influence business environment. The MRTP Act, court law, industrial law, commercial law, and other factors, various other factors are affect the business, and act relating to tax etc affect business environment in different ways. Next thing is population overpopulation कहीं ना कहीं as well as under population adversely affect the business, कहीं ना कहीं business environment के लिए affect करती हैं ये ओवर पॉपुलेशन भी. Is a close relationship between the population and economic development of a country. The availability of adequate labor force, skilled and unskilled labor, help in the industrial development of a country. Overpopulation generate the problem of unemployment, poverty, starvation, and immorality. It also creates the problem of low per capita income and low living standard. International conditions. Next thing is international conditions. So international conditions such as foreign aid, foreign economic policy, balance of trade and balance of payment, exchange rate, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं बिजनेस के लिए. एंड विजिटिंग ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स रिप्रेजेंटेटिव्स एक्सेट्रा क्रिएट इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. एंड ये कहीं ना कहीं ऐसे काम करती हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप बताती हैं, हेल्प करती हैं इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट में विच रिजल्ट इन इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी इससे. सो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. नेक्स्ट थिंग इज transport and communication. Transport and communication system is also an important element in economic environment. Why? Because if you have good transport, then you can remove the hindrance of time. You can आप सही टाइम पर गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफ़र कर पाएंगे जहाँ पर रिक्वायरमेंट है भेजने की. सो आपके पास ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बेटर होना ज़रूरी है. डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. means of transport include like railways, roadways, waterways, and the means of communication are postage and telegram, telephone, electronic equipment. अच्छे होने चाहिए, good and well developed means of transport and communication mobilize the whole economic system, lead to economic development. Next thing is internal and external environment. Let's discuss about it. First one is internal environment. Basically द इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो इंक्लूड करता है फैक्टर्स. कौन कौन से फैक्टर्स? इमीडिएट एनवायरनमेंट हमारे लिए इफेक्ट कहीं ना कहीं तुरंत दिखता है इसमें इंटरनल एनवायरनमेंट में, एंड परफॉर्मेंस तुरंत हमें करना होता है यहाँ पर. दीज इंक्लूड लाइक सप्लायर है, मार्केटिंग है, इंटरमीडिएटरीज हैं, कंपटीटर्स है, कस्टमर है, पब्लिक है. ये सारे इंटरनल एनवायरनमेंट है. द इंटरनल एनवायरनमेंट फैक्टर जो है are more closely linked with the company than the external factor, because if you take action immediate, then you will get good step in business environment. So basically vital to recognize internal environment and is the first responsibility of business, because the day-to-day activities of business are regulated by internal environment. and कहीं ना कहीं बिजनेस में इंटरनल एनवायरनमेंट का बहुत रोल रहता है. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. व्हाट इज एन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट? लेट्स डिस्कस. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज द actual environment of a business where
The institution and regulation its work. Business cannot be done. Business cannot be done without studying external environment. Include larger social forces that affect all the actions in the enterprise as well as internal environment. Namely, if I talk about then demographic, economic, natural, technological, political, and cultural forces. External environment of business and its constituent. Let's discuss economic environment. First one is economic environment. Economic, in the sense of economic conditions, economic policies, and economic system are important external factor where we take some decisions if we read and analyze these things. So अकॉर्डिंग टू स्टार वन की अगर जो एक स्टार वन ने बात कही है, अगर उसके माध्यम से अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में बताता है जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं बिजनेस के लिए. सो वी कैन कंक्लूड दैट द फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट ऑफ अ कंट्री which assist the regulation of economic activity of a person and to fulfill his requirement is called economic environment. The economic conditions of a country, for example, the nature of the economy and the stage of development of economy and economic resources, the level of income, the distribution of income and wealth, these all the things which is affect in business environment. Among the very important determinant of business strategies, ये सारे कहीं ना कहीं इनका मेन रोल रहता है बिजनेसमैन. Second thing is non-economic environment. What is non-economic environment? In non-economic environment, all the things which is constituted in business and which affect the business. कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती हैं बिजनेस में नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में. फर्स्ट वन इज़ फिजिकल एनवायरनमेंट. फिजिकल एनवायरनमेंट इज़ द बेसिस ऑफ बिजनेस. इट डिटरमाइन द लिमिट ऑफ नेचर. बिजनेस कैन मस्ट कंसिडर द फिजिकल environment factors such as quantity and quality of existing forest, wealth, possibility of artificial rain, the exploitation of sea product like fish, the health hazard arising out of population, social cost of rapid urbanization and industrialization. ये कहीं ना कहीं फिजिकल एनवायरनमेंट में अफेक्ट करते हैं बिजनेस के लिए. सो नेचुरल रिसोर्सेज है, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, एनर्जी क्या है, पब्लिक यूटिलिटीज़ क्या है, टोपोग्राफी क्या है, ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं बिजनेस के लिए सारे कंडीशंस. इकोलॉजी क्या है, सोशल एनवायरनमेंट. नेक्स्ट थिंग इज सोशल एनवायरनमेंट. ये भी एक्सटर्नल फैक्टर है. बिजनेस इज़ द सोशल इंस्टीट्यूशन, हमें ये पता होना चाहिए. एंड इट इन्फ्लुएंस्ड बाय social environment. The constituent of social environment like population, expansion and its characteristics, what is the ratio between male and female and caste, religion, education क्या है, इनकम क्या है, एज स्ट्रक्चर क्या है, ये सब हमें पता होना चाहिए इंडिया में. सो फैमिली स्ट्रक्चर क्या है मे बी ऑल्सो affect the business. If we have knowledge about it, then we should take action behalf of that conditions. So level of public responsibilities, mutual cooperation organization, public faith in cooperation organization, private organization, labor union, welfare organization, religion, social organization, responsibility of public, mentality of public toward work, attitude toward management, traditional and scientific approach, customs, ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं बिजनेस के लिए. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. हाउ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इफेक्ट. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं बहुत सारे चीज़ें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आती हैं. लाइक पॉलिटिकल अप्रोच ऑफ गवर्नमेंट. ऑफ गवर्नमेंट की अप्रोच क्या है, पॉलिटिकल
पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। इट कैन बी सोशलिस्टिक हो सकती है, कम्युनिस्ट हो सकती है, मिक्स्ड हो सकती है, एंड कैपिटल इकोनॉमी हो सकती है। सो पब्लिक बेनिफिट पॉलिसीज़ मिलनी चाहिए, पॉलिटिकल डोनेशन मिलने चाहिए पॉलिटिकली बिजनेस के लिए, एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए बिजनेस में, एंड पॉलिटिकली नेशनल डिफेंस पॉलिसी होनी चाहिए, फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, एंड ब्यूरोक्रेसी अच्छी होनी चाहिए, नेशनल प्रेस्टीज हमारे लिए मिलना चाहिए, एंड गवर्नमेंट लॉ एंड पॉलिसीज़ कहीं ना कहीं अच्छी होनी चाहिए बिजनेस में, तभी हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा। नेक्स्ट थिंग इज़ लीगल एनवायरनमेंट। लीगली हमारा बिजनेस जब सब रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे से काम करेंगे हमारे बिजनेस में, तभी हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा। बिजनेस इज प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय लीगल एनवायरनमेंट। इफ देयर इज डिफिशिएंसी ऑफ appropriate legal right for the welfare of business and businessmen, then no one will continue business. The main constitute comparing legal environment of business are constitutional provision, commercial law, economic law. What are the economic law? MRTP एक्ट है, फेमा है, CV है, ये सारे एक्ट हैं जो जिनके बारे में हमें कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। सो इंडस्ट्री एंड लेबर पॉलिसी है, लेबर लॉ है, पॉल्यूशन कंट्रोल लॉ है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है, टैक्स लॉ है एंड पॉलिसीज़, एंड जस्टिस लॉ है, लॉ रिलेटेड टू सोशल कंट्रोल, नेशनलाइजेशन, सोशलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये हमें पता होना चाहिए। Next thing is technological environment. Technological environment we study just before. So the technological development of a country influence strategy of producer, newer goods, market, raw material source, and tools and equipment, services, etc. These all are things we should understand. And technological development has revolutionized इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सो जब हमारे नीड हो तब हमें चेंज करनी चाहिए टेक्नोलॉजी में, अकॉर्डिंग टू सिनेरियो क्या चल रहा है इंडिया में, एक्सटर्नल थिंग्स को हम रीड आउट करके पब्लिक क्या चाहती है उसके अकॉर्डिंग हमें अडॉप्ट करने चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज एजुकेशनल एनवायरनमेंट। एजुकेशनल एनवायरनमेंट, द बिजनेस स्ट्रक्चर and environment is also influenced by the prevailing education system. Level of education क्या है, and taste toward education, technological efficiency, the availability of technical, professional professional education and training, higher education and research management courses, administrative and legal education etc. हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस के लिए एंड इंडस्ट्रीज़ के लिए। जब एजुकेशन अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली हमारा बिजनेस अच्छा ग्रोथ करेगा। हिस्टोरिकल एनवायरनमेंट, हिस्टोरिकल हेरिटेज ऑफ अ कंट्री ऑल्सो इन्फ्लुएंस द करेंट एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। द रोल ऑफ हिस्टोरिकल एनवायरनमेंट क्या करता है, कहीं ना कहीं नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, कल्चरल है, एजुकेशनल है, रिलेटेड फैक्टर्स कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस के लिए एंड देयर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो। एथिकल एनवायरनमेंट, एथिकल एनवायरनमेंट बिजनेस मीन्स बिजनेस हैज़ टू फॉलो एथिकल रूल्स एंड एथिकल कंडीशंस। और इफ़ आई टॉक अबाउट सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ethics refers to the code of conduct that guide an individual in dealing with others. Ethics rules differ from legal rules as much as former are not enforced by public authority, whereas the latter, if we talk about, then legal rules become unnecessary when ethical rules are ऑब्जर्व बाय बिजनेसमैन। जब बिजनेसमैन एथिकल रूल्स को ऑब्जर्व करते हैं देन लीगल रूल्स की कोई वहाँ पर महत्वता नहीं रहती है। सोसाइटी एक्सपेक्ट बिजनेसमैन टू एक्ट एथिकली
Business ethics are the key success of a business in long run. Next thing is cultural environment. The culture of the country is reflected by the art, literature, and lifestyle. The culture reflects the view and mental status of the people of a nation. The nature and view of the people toward business is also influenced by the cultural development. The culture of a nation affect on business decision by affecting demand and market conditions. Next thing is cultural environment के बाद international environment. International environment is very important for from point of views of certain categories of business. It is particularly important for industries directly depend on import और एक्सपोर्ट. कहीं ना कहीं इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है तो उसमें हेल्प करता है. जब डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं ये भी इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट. सो नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इम्प्लाई अ होस्ट ऑफ एनवायरनमेंट फैक्टर, सोशोलॉजिकल फैक्टर, इन एजुकेशनल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, लीगल फैक्टर, हिस्टोरिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर. एक से कहीं ना कहीं फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस के लिए. सो इफ़ वी टॉक अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट, तो बिजनेस एनवायरनमेंट में हमें नॉलेज होनी चाहिए कब चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, ये हमें पता होना चाहिए. बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ डायनेमिक. द एनवायरमेंटल फैक्टर, taste of consumer, fashion habit, technological size, color, quality of product, quantity of product, and availability of new product are always changing in business. For the success of a business, it is essential to be familiar with the changing factor of business environment. Next thing is measurement of risk. Measurement of risk. Uncertainty and risk is involved in the dynamic world of business. In order to measure the business risk, collecting एंड अनसर्टनिटी जहाँ पर होती है तो वहाँ पर हमें पता होना चाहिए द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ यूजफुल एंड इट हेल्प इन कलेक्टिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन बाय विच रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड. हम कहीं ना कहीं मिनिमाइज तो कर ही सकते हैं रिस्क के लिए. नॉलेज ऑफ बिजनेस कॉम्प्लेक्सेस. बिजनेस कॉम्प्लेक्सेस आर ऑल दोज एक्सटर्नल factors which influence firm operation and firm have to respond it immediate. Study of business environment help the manager to understand these factors and complex business operations. Next thing is business fluctuations. Business fluctuations means there are continuous fluctuations on business and the rate of fluctuations is not the same always. To know the fluctuations and their effect, a study of business environment is essential. Survival. Next thing is survival. The study of business environment is must for the survival in the firm. अगर आप सर्वाइवल ही नहीं कर पाएंगे बिजनेस में तो आपका बिजनेस चल ही नहीं पाएगा. आप लॉस होगा आपका और आपका बिजनेस डूब जाएगा. नो फर्म कैन सर्वाइव एंड सक्सीड विदाउट कंटिन्यूशन ऑफ टच एंड विद एनवायरनमेंट. continuous flow of information between firm and environment is essential for the survival of firm in the organization. Next thing is success and progress. Success and progress. The success and progress and prosperity of a business firm depend on the study of analysis of business environment. No firm
can get success without the knowledge of environment. If a firm is not familiar with its environment, it cannot succeed. Effective decision, effective and if firm decision be those which can be implemented and taken according to the business environment. Thus, the study of business environment is essential to taking effective and firm decisions. Long term planning, next thing is how can we make long term planning. In order to formulate long term planning, analysis of present environment and forecasting of future environment is essential. Strategy and objective of long term planning can be determined while studying environmental factor. Next thing is evaluation of object and planning. In order to gain access or success in business, how can we achieve success in business? Planning is essential. It should be framed according to business environment. It should be evaluated time to time so that the management can modify plan and its object according to the changing environment. Next thing is distribution of wealth. Distribution of wealth. In order to get desired profit and desired result, optimum and economic use of factor of production, the knowledge of external environment is essential for the business firm. Next thing is coordination. Coordination. Yes. In order to achieve these target, every business institution has to coordinate itself with various factors of environment. It has to coordinate in its operations according to the changing external environment. Next thing is effective management. How can we make effective management? Coordination with business environment is the precondition, पहली condition for the success of firm management. Management have to develop communication between firm and environment so that it can get reliable information in due time. So it will be helpful in decision making and success of business. The significance of business environment is not limited only by this. It is all more as than this because no all external factor can properly without favorable environment. So now we are discussing, I think you face some problem. So now I solved this problem. I will. हम पढ़ रहे थे ऑब्जेक्टिव्स. अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स इन बिजनेस? फर्स्ट वन इज स्टडी ऑफ economic environment is essential for the successful operation and development of an economy. Thus, its objective is dynamic economic जो डायनेमिक होती है बिजनेस में and always changes its requirement for successful operation of business.
to know about the changes taking place in the economic environment so that business can run smoothly. To study environmental, natural and element of characteristics controlling economy as to cope up with the dynamic conditions. So to maintain the environment according to economic development requirement, always remember how to maintain it for maximum utilization of environment for economic development of the country. We should know all the things to introduce latest technology, resources and use of opportunities so that newer field and resources can be searched. What are the limitations if I talk about in business environment? Then there are various limitations. Study of environment does not eliminate uncertainty of future, nor it foretell the future, but it only help to reduce surprises and take care of them in advance. एडवांस में हमें कहीं ना कहीं हम रिड्यूस कर सकते हैं इनको. इट डज नॉट guarantee effectiveness of organization, and also the potential of study of environment are not often realized because it is not practiced properly. So कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें इफेक्ट करती हैं बिजनेस के लिए, एंड ये लिमिटेशन की तरह काम करती हैं. वन मे बी लॉस्ट इन द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड एंड टू मच रिलायंस ऑन इट may result in loss. Next thing is national income. What is national income? What is national income? So national income or national product is a monetary measure of income generated from within the country plus net income received from abroad during a year. If I talk about in short, then in simple word, it is a sum of domestic factor and net factor from abroad. National income or national dividend. National income is also called national dividend. It has been defined in a number of ways. The various definitions of national income can be classified given by Marshall. What said Marshall? So Marshall said that the labor and capital of a country acting on its natural resources produce annually a net aggregate of commodities, material and immaterial, including services of all kind. नेशनल डिविडेंड की बात करें, नेशनल इनकम और नेशनल डिविडेंड एक ही है. नेशनल डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव इनकम ऑफ अ कमोडिटी इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स इनकम डेराइव्ड फ्रॉम अब्रॉड विच कैन बी मेजर्ड इन मनी, जो मनी के टर्म में मेजर हो सके. नेशनल डिविडेंड मॉडर्न इकोनॉमी के पर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें नेशनल इनकम, तो it is the net output of commodities and services flowing directly and flowing during the year from the country and productive system in the hand of the ultimate consumer. Next thing is national income is the loose name. National income is the loose name we give for the money measure of the overall flow of goods in the services in the economy.
What are the feature of national income in India? In India, we talk about national income and we lived in India, so we talk about feature of national income in India. Excessive dependence on agriculture. One very significant feature of India is national income is that a considerable proportion. What is the proportion and how much? 26.1% of the national income is now being contributed by the agriculture sector. So this sector is very important because of its employment potential, marketable surplus, and necessary support to industrial sector. Growing contribution of territory sector. Another important feature of India's is national income is that contribution of territory sector has been increasing continuously over the year. The percentage share of territory sector was 28.5%. 28.5%. What is the year? 1950 to 51 में इतना परसेंटेज शेयर था 28.5%. रोज ऑफ आगे चल के क्या हुआ? चेंजेस हुए 42.7% इन 1996 से 1997 में ये परसेंटेज रही. फर्दर बात करें तो 49.4% कब हुए? 2001 से 2002 में. तो ये चेंजेस आए ग्रोइंग कंट्रीब्यूशन में टेरिटरी सेक्टर के अकॉर्डिंग. टेरिटरी सेक्टर में रीजनल डिस्पैरिटी. Another striking feature of India's national income is its regional disparity. Among all states, only 6 states of the country have recorded a higher per capita income over the national figure. Out of these 6 states, states like Punjab rank higher and Bihar rank lower in regional disparity. Poor growth rate of GDP and per capita income. The growth of GDP and per capita income as compared to other countries are very poor in our country. The annual average growth rate of GDP in India was 5.2% during 1980 to 1992 as compared to 9.1% for China and 5.7% of Indonesia. कितना डिफरेंस है इन बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड इंडोनेशिया के परसेंटेज में जीडीपी में. इफ़ वी टॉक अबाउट इन पॉइंट ऑफ व्यू जीडीपी, देन दिस लो पर कैपिटा इनकम हैज़ रिजल्टेड फ्रॉम लोअर ग्रोथ इनकम इन इंडिया. दिस लो पर कैपिटा इनकम हैज़ रिजल्टेड lower growth rate of national income or higher rate of population. Urban and rural disparities. Urban and rural disparities. Urban and rural disparities of income is another important feature of our national income. The इंडिया की बात करें तो इंडिया में रूरल हाउसहोल्ड सर्वे shows that the level of income in urban area is just twice that of the rural area, depicting a poor progress of the rural economy. So, unequal distribution of income and poor standard. Another factor is also this. Another feature of national income is India is unequally distributed and ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करें तो 1994 में ये दिखाया गया है कि 1993 से रिचेस्ट पीपल 20% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन शेयर कर रहे हैं 84.7% ऑफ द टोटल इनकम एंड द पुअरेस्ट जो हैं वो 20% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन शेयर ओनली 1.4% टोटल इनकम. कितना फार डिफरेंस है दोनों में, रिच एंड पुअर में. तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है.
Due to this highly unequal distribution of income, the standard of living of the majority of population of our country is very poor. इसके पीछे मैंने एक वीडियो बनाया है. इफ़ यू वांट टू वॉच इट देन यू कैन गो ऑन प्ले लिस्ट इन अवर चैनल. ये डिफरेंस हमेशा बरकरार रहने वाला है, इसलिए रिच रिच होते जा रहे हैं, पुअर पुअर होते जा रहे हैं. क्योंकि पुअर के जो गरीब लोगों में से अगर कोई पढ़ लिख के अगर ऊपर जाता है तो उसको अगर नौकरी मिलती है तो वही मिलती है 15,000 20,000. वहीं अगर अमीर का बच्चा अगर पढ़ के जाता है तो उसे मिलते हैं 1 लाख 1.5 लाख. तो ये इसमें रिक्वायरमेंट है चेंजेस होने की. अगर गवर्नमेंट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दे और चेंजेस करते तो भले ये संभव है, वरना ये कभी इसमें सुधार नहीं होगा. तो इंडिया में ये बहुत बड़ा इश्यू है इनकम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का. पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. नेक्स्ट वन इज पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. कम टू द पॉइंट. Another important feature of India's national income is that the major portion of it is generated by the private sector and minor portion is generated by the public sector. Unequal growth of different sector. In India's different sectors are growing at unequal rate. The share of private primary sector has been declining over the year. The share, which was 56.4% in 1950-51, declining in 27.8% in 1996-97, and further to 26.1% in 2001 to 2002. The share of tertiary sector has, however, been increasing over the year. So, if I talk about what are the causes of national income, low national income in India, देन एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर. वही है, जब ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर पर डिपेंड होंगे तो 70% ऑफ द पॉपुलेशन, जैसा कि हमें पता ही है, लिव इन रूरल एरियाज एंड नियर बाय 64% ऑफ देम डेराइव देम लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर. वट एग्रीकल्चर इज बेस्ड ऑन ऑर्थोडॉक्स मेथड and of production. In the absence of the use of modern method and technology, agriculture result in poor per capita income, and agriculture result in poor per capita income. So poor industrial development, another important reason, poor industrial development. Behind the slow growth sector, the industrial sector in India has failed to maintain a consistent and sustainable growth rate during the plant development, and a consistent and sustainable growth rate during the plant development period. Because moreover, if I talk about the development of basic industry is also lacking in the industry, and all these have resulted in poor growth rate in the national income of the country. कैपिटल डिफिशियंसी. जब तक कैपिटल की डिफिशियंसी रहेगी तब तक हम अपना बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. कैपिटल प्ले अ स्पेशल रेट and special role in establishment of industry, transport, irrigation and other means of development. Hence, the main factor accounting for the economic backwardness in India is deficiency of capital. It look a long time since, if I talk about then 1950 की बात करें तो 1950 में for the progress domestic investment rate to reach around 23 से 26% of the GDP. It means that investment grew at a very slow rate. इंडिया में कितना स्लो इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं. Poor development of infrastructural facilities. Next thing is poor development in infrastructural facilities. In India, the infrastructural facilities like transport, communication, poor irrigation, ये क्या है, बहुत poor है infrastructure में, have not yet been developed satisfactorily as per requirement. And throughout the country, अगर हम पूरे country की बात करें, this has been resulting major hurdles in
the path of development of agriculture and industrial sector of the country and leading to poor growth of national income. So, growth of population. Population is important determinant factor in the economic growth of the country. We talked just before about population growth. Massive effort and huge investment toward development are dissipated largely to feed the increasing population in India. The increase in national income is eaten away by the progressive increase in population, and consequently the growth away by the progressive increase in population, and national income is either static or very slow. That's why national income is either slow or very slow. Inefficient labor. Labor in India is generally less efficiency as compared to other countries. All the resources are not properly utilized, and some of them remain unutilized or underutilized. Thus, lead to highest cost of production. And as a result, क्या निकल के आता है? National income and per capita income level is very low. Lack of skilled labor. रीज़न कहीं ना कहीं ये रहता है, लैक ऑफ स्किल्ड लेबर and technological knowledge. There is no proper provision for industrial education and training in India. Despite large population and absent supply of labor, there is not a skilled labor and trained labor. The result is very low productivity. इसके पीछे रीज़न मैं कहूँगा, आपने इंडिया में क्या है सिस्टम. इंडिया में सिस्टम ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर या तो पढ़ाई करते रहते हैं, पढ़ाई करने के बाद में सीधे जाते हैं नौकरी पर, तो उन्हें एक्सपीरियंस होता नहीं है, लैक ऑफ ट्रेंड होते हैं स्किल्ड, इसीलिए उनमें स्किल की कमी होती है. थियोटिकल कंसेप्ट होता है अपने ग्रेजुएशन और स्कूलिंग में, वही रटते हैं, पढ़ते हैं, और वो पढ़ के जब नौकरी पर जाएंगे तो क्या होगा, काम नहीं कर पाएंगे. सो ये कहीं ना कहीं बहुत सारे रीजंस हैं. क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी,